When general elections loom, the one issue that all political parties raise to win over potential voters is public infrastructure. Plans for building new roads and flyovers, often unnecessarily, and improving existing ones, become part of their largely unfulfilled manifestos. They also talk of education, employment, health, and public transport. But in all this, the missing piece of the jigsaw puzzle are public washrooms. As per a 2015 UNICEF estimate, 41 million Pakistanis do not have access to a toilet. The absence of public toilets limits the possibility of maintaining a land use plan, worsens public health and restricts access to education, employment and recreation, especially for women. Women in Karachi maintain that one reason why they frequent new malls in the city is because they contain clean, well-lit toilet facilities. Understanding the necessity for public toilets, the Sindh government decreed in 2012 that the private sector build public toilets with every petrol pump. This was implemented, but today, they have no water, no lights, and are unclean. Gen Z's ban on public urinals about 4 decades ago had also exacerbated the problem because in the absence of public toilets, cisgender men resorted to urinating in the open, which put children at risk of stunting. Women have been the worst sufferers as unlike men, they cannot even relieve themselves in the open due to socio-cultural and biological factors. When it comes to biology, it is no secret that most women typically menstruate for 4 decades. In a culture where menstrual products are kept hidden from the public eye, it is unsurprising that the need for period-friendly, and, thus, women-friendly, public facilities is brushed under the rug. This probably does not cross the minds of our policymakers, given that the bulk of them are cisgender men who have never had to face the physical and emotional pain of menstruating. Then come sociocultural factors, which are intertwined with biological considerations. There is evidence to show that conversations about urination facilities are taboo in conservative societies like ours. Women are discouraged from drinking water or eating adequately at their office, for as long as they are outside their home, just so they don't have to undergo the discomfort of locating and using a public washroom. Pakistan is among the 10 worst countries for access to toilets. Women-specific washrooms, rarely found in public spaces, tend to be situated in dark corners and are poorly designed. Bathroom locks are either non-existent or weak, increasing the threat of sexual violence. Ultimately, women's health is jeopardized because their bodies do not get the required nutrients or hydration. Moreover, they develop urinary tract infections, as commonly seen after the 2022 floods, when millions of women struggled to use washrooms in the camps. When public washrooms are unavailable or unclean and without water, girls and women are disproportionately hit. They are forced to miss school or work, and eventually confine themselves to their homes. Those opposed to girls' education benefit from this gap in service delivery. Women's workforce participation and education take a back seat, allowing an already male-dominated society to further exclude women. A major reason for the non-maintenance of existing public washrooms is that the government body that owns them rents them out to contractors for maintenance, without proper monitoring. The contractor charges people which deters many from using the washrooms. Sanitary workers who clean them complain of being overworked, underpaid, or not paid at all for months. According to a 2016 WaterAid report, Pakistan is among the 10 worst countries for access to toilets. This highlights the need for urgent intervention by public sector institutions. Gender-segregated public washrooms need to be constructed in every district of Karachi with guaranteed supply of clean running water, soap and toilet paper, and sanitary pads. 3 months ago, Karachi Administrator Saifur Rahman vowed to have 100 public washrooms constructed in Karachi, half of them for women. There is a need to follow up on this promise and make sure that it materializes, though 100 toilets are a drop in the ocean. If we get enough well-kept public toilets, our society will change rapidly. More women from the middle and working classes will be able to conduct business and trade, study, do paid work, and occupy public spaces for leisure. The public spaces housing these toilets will also be frequented much more than they are today,
hence fortifying women's right to the city and nurturing an equitable, gender-sensitive society. Dhuha Alvi is a writer whose research revolves around gender, class, and politics. Arif Hasan is an architect and urban planner. Published in Dawn, March 26, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. जब आम इंतखाबात होने वाले हैं तो एक मसला जो तमाम सियासी जमातें मुमकिना राय दहिंदगान को जीतने के लिए उठाती हैं वो अवामी बुनियादी ढांचा है। नई सड़कों और फ्लाई ओवर्स की तामीर अक्सर गैर ज़रूरी तौर पर और मौजूदा सड़कों को बेहतर बनाने के मंसूबे बड़े पैमाने पर अधूरे मंशूर का हिस्सा बन जाते हैं। वो तालीम, रोजगार, सेहत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात करते हैं। लेकिन इस सब में जिक्सो पजल का गुमशुदा टुकड़ा अवामी वाशरूम है। यूनिसेफ के 2015 के अंदाजे के मुताबिक 41 मिलियन पाकिस्तानियों को बैत अल-खला तक रसाई हासिल नहीं है। अवामी बैत अल-खला की अदम मौजूदगी ज़मीन के इस्तेमाल के मंसूबे को बरकरार रखने के इम्कान को महदूद करती है, सेहत आमा को ख़राब करती है और तालीम, रोज़गार और तफरीह तक रसाई को महदूद करती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। कराची में ख़वातीन का कहना है कि शहर में नए माल्स में कसरत की एक वजह यह है कि उनमें साफ सुथरे और रोशन टॉयलेट की सहूलियात मौजूद हैं। पब्लिक टॉयलेट की ज़रूरत को समझते हुए सिंध हुकूमत ने 2012 में फैसला किया कि निजी शोबा हर पेट्रोल पंप के साथ अवामी बैत अल-खला तामीर करे। ये नाफिज किया गया था, लेकिन आज इनके पास पानी नहीं है, कोई रोशनी नहीं है और वो नापाक है। तकरीबन 4 दहाइयाँ कबल जनरल ज़िया की जानिब से अवामी पेशाब करने पर पाबंदी ने भी इस मसले को मज़ीद बढ़ा दिया था, क्योंकि अवामी बैत अल-खला की अदम मौजूदगी में मर्द खुले में पेशाब करते थे, जिसकी वजह से बच्चों की नशोनुमा मुतासिर होने का खतरा बढ़ जाता था। ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं क्योंकि मर्दों के बरक्स वो समाजी व सकाफती और हयातियाती अवामिल की वजह से खुद को खिले में भी आराम नहीं कर सकती। जब हयातियात की बात आती है तो ये कोई राज नहीं है कि ज़्यादातर ख़वातीन आम तौर पर 4 दहाइयों तक हैज़ का शिकार होती हैं। एक ऐसी सकाफत में जहाँ हैज़ की मसनूआत को अवाम की नज़रों से पोशीदा रखा जाता है, ये हैरत की बात नहीं है कि हैज़ दोस्त और इस तरह ख़वातीन दोस्त अवामी सहूलियात की ज़रूरत को कालीन के नीचे दबा दिया जाता है। ये बात शायद हमारे पॉलिसी साजों के जहनों में नहीं आती, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर मर्द हैं जिन्हें हैज़ के जिस्मानी और जज्बाती दर्द का कभी सामना नहीं करना पड़ा। इसके बाद समाजी और सकाफती अवामिल आते हैं जो हयातियाती गौर व फिक्र के साथ जुड़े हुए हैं। इस बात के सबूत मौजूद हैं कि हमारे जैसे क़दामत पसंद मुआशरों में पेशाब की सहूलियात के बारे में बातचीत ममनू है। ख़वातीन को अपने दफ्तर में पानी पीने या मुनासिब तरीके से खाने से हौसला शिकनी की जाती है जब तक कि वो अपने घर से बाहर हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्हें अवामी वाशरूम तलाश करने और इस्तेमाल करने की तकलीफ से गुजरना ना पड़े। पाकिस्तान बैत अल-खला तक रसाई के हवाले से दुनिया के 10 बदतरीन ममालिक में शामिल है। ख़वातीन के लिए मखसूस वाशरूम अवामी मकामात पर शाज़ व नादिर ही पाए जाते हैं, तारीक कोनों में वाक़े होते हैं और ख़राब डिज़ाइन किए जाते हैं। बाथरूम के ताले या तो मौजूद नहीं हैं या कमज़ोर हैं, जिससे जिनसी तशद्दुद का खतरा बढ़ जाता है। आखिरकार ख़वातीन की सेहत खतरे में पड़ जाती है क्योंकि उनके जिस्म को मतलूबा ग़िज़ाई अज्जा हाइड्रेशन नहीं मिलती है। इसके अलावा उन्हें पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होता है, जैसा कि आम तौर पर 2022 के सैलाब के बाद देखा जाता है, जब लाखों ख़वातीन को कैंपों में वाशरूम इस्तेमाल करने के लिए जिदोजहद करनी पड़ती थी। जब अवामी वाशरूम दस्तयाब नापाक और पानी के बगैर होते हैं तो लड़कियों और ख़वातीन को गैर मुतनासिब तौर पर मारा जाता है। उन्हें स्कूल का काम छोड़ने पर मजबूर किया जाता है और आखिरकार खुद को अपने घरों तक महदूद कर लिया जाता है। लड़कियों की तालीम की मुखालफत करने वालों को खिदमात की फराहमी में इस खला से फ़ायदा होता है। ख़वातीन की अफरादी क़ुव्वत की शिरकत और तालीम पीछे रह गई है, जिसकी वजह से पहले से ही मर्दों के गलबे वाले मुआशरे में ख़वातीन को मज़ीद खारिज कर दिया गया है।
मौजूदा अवामी वाशरूम्स की देखभाल न होने की एक बड़ी वजह यह है कि उनका मालिक सरकारी इदारा मुनासिब निगरानी के बगैर उन्हें देखभाल के लिए ठेकेदारों को किराया पर देता है। ठेकेदार लोगों से मुआवजा लेता है, जो बहुत से लोगों को वाशरूम इस्तेमाल करने से रोकता है। उनकी सफाई करने वाले सफाई मुलाजमीन शिकायत करते हैं कि उन्हें महीनों तक ज्यादा काम दिया जाता है, कम तनख्वाह दी जाती है, बिल्कुल भी तनख्वाह नहीं दी जाती है। वाटर एड की 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बैत अल-खला तक रसाई के हवाले से 10 बदतरीन ममालिक में शामिल है। इससे सरकारी शोबे के इदारों की जानिब से फौरी मुदाखलत की जरूरत पर रोशनी पड़ती है। कराची के हर जिला में साफ पानी, साबुन और टॉयलेट पेपर और सैनिटरी पैड की फराहमी की जमानत के साथ सिंफी तौर पर अलग अलग अवामी वाशरूम तामीर करने की जरूरत है। 3 माह कबल एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफ अर रहमान ने वादा किया था कि कराची में 100 पब्लिक वाशरूम्स तामीर किए जाएंगे, जिनमें से आधे ख्वातीन के लिए होंगे। जरूरत इस बात की है कि इस वादे पर अमल किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये पूरा हो। हालांकि 100 बैत अल-खला समंदर में एक कतरा है। अगर हमें अच्छी तरह से रखे गए अवामी बैत अल-खला मिल जाएं तो हमारा मुआशरा तेजी से बदल जाएगा। मुतवस्सित और मेहनतकश तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन कारोबार और तिजारत करने, तालीम हासिल करने, उजरत पर काम करने और तफरीह के लिए अवामी मकामात पर कब्ज़ा करने के काबिल होंगे। इन बैत अल-खला रखने वाली अवामी जगहों पर भी आज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बार आमद और रफ्त होगी, लिहाजा शहर में ख़वातीन के हक़ को मजबूत बनाया जाएगा और एक मसावी, सिनफी हसास मुआशरे की परवरिश की जाएगी। धुहा अलवी एक मुसन्निफ़ा है जिनकी तहक़ीक़ सिन्फ़, तबके और सियासत के गिर्द घूमती है। आरिफ हसन एक मेमार और शहरी मंसूबा साज हैं। अख़ज़ शदा बतारीख़ 26 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.